So what is the Kirchhoff law, beta? First law is right now for me called as Kirchhoff's current law or also junction law. It is based on first point. It is based on law of conservation of capital charges. Law of conservation of your charges पे depend कर रहा है इससे. ठीक है? So इसका definition देखो क्या है? The sum of the algebraic sum of लिख लो ना. The algebraic sum of incoming currents and outgoing currents at a junction is equals to 0. ठीक है ना? तो ये देखो ये जंक्शन है, तो यहाँ से मान के चलो there is a current which is entering, that is I1, isn't it? And this is a junction where the current is entering, ये हो गया I2. And this is a junction where the current is entering, that is nothing but I3. And this is a junction where the current is going away, that is nothing but I4. And this is a junction where the current is going out, this will be equal to I5. So how much current is being moving towards the junction, beta? Incoming currents क्या है यहाँ पर? I1 plus I2 plus I3. Incoming we take it as positive. Must be equal to your outgoing. Outgoing मतलब क्या हो जाएगा? I4 plus I5. Isn't it? So यहाँ पर हो गया incoming currents. Incoming current is equals to your outgoing currents. Isn't it? या इसको भी अगर अंदर ले लो तो this will be equal to how much for me? I1 plus I2 plus I3 minus I4 minus I5 will be equal to 0. तो ये हो गया अपना Kirchhoff's first law. Kirchhoff's first law या KCL बोल दो, Kirchhoff current law, और also बोलो junction law, one and the same. ठीक है? It is based on what, beta? It is based on law of conservation of charges. Am I clear for everyone? शायद clear है? So KCL is also called as a beta Kirchhoff's first law. Kirchhoff's first law, or also known as current law, or also known as junction law. आ गया सभी को? ठीक है? Example देख लीजिए. मान के चलिए this is some junction like this. इसमें से करंट जा रहा है 2 amperes. और इसमें से करंट आया 6 एम्पियर्स, और यहाँ पर करंट गया 1 एम्पियर, और यहाँ पर करंट गया मान के चलिए सम 1 एम्पियर. तो इसमें करंट कितना होगा? ठीक है, दिस इज द प्रॉब्लम. तो देखो 2 और 6 दोनों एंटर हो रहे हैं यहाँ पर, तो टोटल कितना हुआ? 8 एम्पियर्स. 8 एम्पियर्स यहाँ पर आ गए, तो 8 एम्पियर्स में 1 एम्पियर यहाँ चले गए, तो यहाँ पर कितना हुआ? 8 minus 1, that is 7 amperes. 7 amperes में 1 ampere इधर चले गया, तो this will be 6. So I की वैल्यू कितनी हो गई? 6 amperes. That will be the answer. Clear, बेटा? Sure. Next one. Next one is Kirchhoff's voltage law, KVL, or also known as mesh law, or also known as loop law. Kirchhoff's voltage law, Kirchhoff's second law बोलो, or it is also called as Kirchhoff's second law. This is based on law of conservation of. It is based on law of conservation of capital energy. It is based on law of conservation of energy. Based on law of conservation of energy. First law is based on law of conservation of charges. Second one is based on law of conservation of energy. इसका definition देखो बेटा. इसका definition देखो. The sum of all EMFs and
all potential difference across any closed circuit must be equal to 0. Must be equal to 0. Okay. So what is the definition? The sum of all the EMFs and all the potential difference across any closed circuit must be equal to कितना 0. मतलब मैथमेटिकली अगर लिखूं मैं सम मतलब क्या सबको ऐड करना है तो समेशन ऑफ all the EMFs plus summation of all the potential difference मतलब I into R Ohm's law must be equal to 0. Summation of all the EMFs plus summation of all the currents until I into R must be equal to 0. Ohm's law. Potential difference मतलब क्या बेटा I into R. Potential difference मतलब क्या I into R. ठीक है ना अब इसका साइन कन्वेंशन लिख लीजिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन फर्स्ट वन in direction of current I into R will be negative okay opposite to direction of current I into R will be positive. Same direction में जा रहे हो तो negative, opposite direction में जा रहे हो तो negative. Next one. Take the sign of EMF wherever you are ending. जैसा मान के चलो एक पॉजिटिव टर्मिनल है नेगेटिव टर्मिनल है यू आर गोइंग फ्रॉम ए टू बी तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है दिस इज द फेलो एक पर्सन स्टार्ट हुआ यहां से एंड ही इज गोइंग फ्रॉम ए टू बी के जा कहां रुक रहा है ए से जाके बी के नहीं रुक रहा यानी इसका ईएमएफ कितना बन जाएगा दिस ईएमएफ विल बी टेकन एज नेगेटिव जहां पर रुक रहा है तो जो टर्मिनल लगा रखा है उसको वो वाला ले लीजिए यहां पर जाके रुक रहा है ना ये तो ये जाके रुक रहा है मतलब बी के पास कौन सा टर्मिनल हो गया नेगेटिव तो ईएमएफ क्या हो गया नेगेटिव अगर यही वाले सिचुएशन में मान के चलो ए पॉजिटिव है ये नेगेटिव है दिस इज द टर्मिनल बी दिस इज द टर्मिनल ए पॉजिटिव है ए नेगेटिव है ये ईएमएफ है अब पर्सन जो है ना ही इज गोइंग राइट नाउ फ्रॉम बी टू ए लाइक दिस अरे जाके कहाँ रुकेगा बेटा ये यहाँ कहीं रुकेगा तो इसका ईएमएफ क्या बन जाएगा E इज इक्वल्स टू पॉजिटिव बस समझ में सेम डायरेक्शन में जा रहे हो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट it will be positive
चलिए बेटा, सेकंड कन्वेंशन क्या था? इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ योर करंट I into R will be negative, ठीक है ना? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट I into R will be positive. उसके बाद खराब हो गया, आराम से then when battery is coming बेटा, E will be negative, जहां पर एंड हो रहा है वहां पर, and E will be positive, ये पॉजिटिव होना चाहिए, this will be positive. So where you are ending, you are going from B to A, ठीक है ना? So when you are going from A to B, when you are going from A to B negative, when you are going from B to A it will be your positive, ठीक है ना? एक एग्जांपल ले ले, मान के चलो यहाँ पर मेरे पास एक EMF है सर, यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है, फिर यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है, फिर यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3 और ये हो गया EMF E. इसको लिख के बताइए जल्दी से, गोइंग फ्रॉम A to B, B to C, C to D, ठीक है ना? There is a flow of a current in this one, I amperes. This may be same I amperes जाएगा, this may be same I amperes जाएगा. So closed circuit is A, B, C, D. This will be your closed circuit, isn't it? A to B जा रहे हो तो minus I1, sorry, I into your R, minus I into R, then minus I into your R2, then minus I into your R3 plus E will be equal to 0. Can I write like this? Yes, sir. Isn't it? Same direction में जा रहे हैं तो negative, opposite direction में जा रहे हैं तो positive. Clear? क्या बोल? यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हो ना, यहाँ जाके यहाँ पर एंड कर रहे हो, A B C D फिर ये तक जाना, क्लोज सर्किट करना. सो क्लोज सर्किट व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम A B C D A तो D तक जाके फिर रुक रहे हो बेसिकली यहाँ पर, तो इट इज राइट नाउ फॉर मी पॉजिटिव टर्मिनल. आ गया सभी को साइन कन्वेंशन? क्लियर है? चलो नेक्स्ट वन इज व्हीटस्टोन ब्रिज. Wheatstone bridge. It is a combination of 5 resistors बेटा, ऐसा कुछ. तो इन दोनों के बीच में एक रेसिस्टेंस है और इन दोनों के बीच में एक रेसिस्टेंस है और इन दोनों के बीच में एक रेसिस्टेंस है और इन दोनों के बीच में एक रेसिस्टेंस है और बीच में there is one resistance. Okay. So this one is P, this one is Q, this one is R, this one is S. And this is a terminal A, this is a terminal B, this is a terminal C, and this is a terminal D. A is connected to positive terminal of the battery, and B is connected to negative terminal of the battery. Okay. पॉजिटिव नेगेटिव, इसका हो गया ये पोटेंशियल बी, ठीक है. इसमें से करंट जाएगा, आई में से करंट जाएगा, ये है टोटल करंट आई. जैसे जंक्शन के पास गया देयर इज ए डिवीजन ऑफ करंट, ये हो गया I1, ये हो गया I2. I1 यहाँ पर गया, फिर करंट डिवाइड हो गया, दिस वन इज मान के चलो I3 एंड दिस इज द करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर. फिर I2 इधर आ गया तो यहाँ पर भी IG आ गया और यहाँ पर हो गया I4. ये पूरा मिलके फिर वापस कितना करंट जा रहा है? So let us try to apply KCL first. KCL for junctions A and C. चलो बताओ, जंक्शन A के पास क्या होगा बताइए? At A I will be equal to कितना? I1 plus I2, isn't it? At B क्या हो जाएगा? I1 will be equal to your IG plus I3.
ठीक है। Then at D, I4 will be equal to IG plus I2. Left. Yes, sir. Sure. Now apply KVL per loop ACDA को आप KVL अप्लाई करो in the same direction, मतलब minus I1 into P, same direction minus I2 into your ये गैल्वेनोमीटर का डिस्टेंस हो गया मान के चलो G, तो ये हो गया कैपिटल G। देन यहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है बेटा D2A ऑपोजिट जा रहा है तो क्या हो जाएगा प्लस I2 into इसका रेजिस्टेंस must be equal to 0, isn't it? Then again KVL per loop right now take the loop C B D C, आप लोग बताइए C से B जा रहा सेम डायरेक्शन में, मतलब कितना माइनस I3 into your Q, B2 D जा रहा हूं ऑपोजिट डायरेक्शन यानी प्लस I4 into your S, D2 C जा रहा हूं ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब प्लस IG into your capital G must be equal to 0, ठीक है ना। This is my equation number 1, this is my equation number 2, this is my equation number 3, this is my equation number 4, this is my equation number 5. So I have applied the KVL and KCL for the Wheatstone bridge. For balanced condition for Wheatstone to be balanced, current through galvanometer must be equal to 0. Current through galvanometer must be equal to 0. अगर current through galvanometer 0 हो गया, then from equation 2 क्या होगा बताइए, I1 will be equal to I3, isn't it? And from equation 3 I4 will be equal to I2, देख सकते हैं सर। इक्वेशन 2 में IG को 0 डाल दीजिए, यहाँ पर 0 डाल दीजिए तो I1 will be equal to I3, इसमें भी IG को 0 डाल दीजिए, I4 will be equal to your I2, isn't it? Now from equation 4 देखो क्या लिख सकता हूँ इक्वेशन 4 में IG को 0 डाल दीजिए माइनस I1 into your P माइनस 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा बेटा। IG को हम लोग 0 डाल दिए तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी ये वैल्यू 0 बन जाएगा, तो कितना बन जाएगा माइनस, तो ये हो गया प्लस I2 into your कैपिटल R मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी ये बन गया मेरे पास माइनस I1 into P इज इक्वल्स टू माइनस I2 into R, माइनस माइनस चले गया तो यहाँ पर कितना आ गया I1 divided by I2 will be equal to how much for me R divided by P. This is equation number 6. This is from equation कौन सा लिया था मैंने 4. Now from equation 5 यहीं लिख रहा हूँ, from equation 5 में भी देख लीजिए माइनस I3 into your Q प्लस I4 into S must be equal to 0, यानी माइनस I3 into Q will be equal to minus I4 into S, minus minus gets cancelled, I3 divided by I4 will be equal to S divided by Q. This is equation number 7, isn't it? Then बेटा अब I1 की वैल्यू किसके बराबर है बेटा, I1 की वैल्यू किसके बराबर है I3 के बराबर है, और I2 की वैल्यू किसके बराबर है I4 के बराबर है। तो from equation 6 I can write I3 divided by I4 will be equal to how much for me R by P. This is your equation number 8. Equating 7 and 8 क्या होगा देख लीजिए, I3 by I4 किसके बराबर है बेटा S by Q के बराबर है,
So I can write here R by your P will be equal to your S by your Q. इसको इधर ला लीजिए, इसको इधर ले लेके जाइए. So this value will become for me how much? P by Q is equals to R by S. This is the condition for the Wheatstone bridge. Isn't it? What is the condition? If P by Q is equals to R by S, then the bridge is said to be balanced. Condition क्या है मेरे पास? If the resistance में ये P और Q, ये R और S is constant, we can remove this one. Isn't it? That means the galvanometer will become for me this one, यानी 0. तो ये सर्किट ऐसा बन जाएगा बेटा. तो ये वाला सर्किट ऐसा कुछ बन जाएगा. यहाँ पर एक रेसिस्टेंस था, यहाँ पर एक ऊपर और यहाँ पर एक नीचे, और ये वाला ऐसा, बीच वाला तो निकल गया अभी. फिर यहाँ पर ऐसा. तो ये क्या था P, ये क्या था Q, this is R, this is your S, this is the terminal A and this is the terminal B. तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो क्या P and Q will be in series बेटा? क्या R and S will also be in series? तो this two are in series मतलब ये क्या हो जाएगा? ऐसा बन जाएगा, एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस बन जाएगा ऊपर और नीचे भी एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस बन जाएगा. तो ये हो गया पॉइंट B और ये हो गया पॉइंट A. तो ये हो गया P plus Q और ये हो गया R plus S. Now these two are in which combination beta? These two are in which combination? Parallel. ठीक है? So these two are in the parallel combination. Okay. So our resistive resistance across A and B will be equal to P plus Q into your R plus S divided by P plus Q So P plus Q and R plus S will be in what combination? Parallel. So effective resistance across A and B will be equal to P plus Q into your R plus S divided by P plus Q plus R plus S. This will give me the effective resistance across your A and B. Clear beta? So condition क्या है Wheatstone bridge के लिए? अगर 5 resistance है, the current through the galvanometer is becoming 0, then P by Q is equals to your R by S. इसका एक छोटा application है, that is about your meter bridge. Meter bridge. थोड़ा advanced compared to the Wheatstone. Based on what? Based on Wheatstone. Based on Wheatstone bridge. इसमें क्या होता है? अपने पास एक वायर होता है बेटा यहाँ से यहाँ तक. This is your A and this is your B. And यहाँ पर एक resistance होगा और यहाँ पर एक resistance होगा. ठीक है? यहाँ पर बीच में galvanometer. And this galvanometer is connected with the jockey. तो यहाँ पर कनेक्ट करें. ठीक है? ये R हो जाएगा, ये X हो जाएगा unknown, ये हो जाएगा L, ये हो जाएगा 100 minus L. क्योंकि टोटल लेंथ इज राइट नाउ फॉर मी 100 सेंटीमीटर्स. लेंथ A to B कितना है? 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर्स. अगर बैलेंसिंग लेंथ L है, सब मान के चले C, तो C to B will be equal to 100 minus L. So condition for the this one, and if P by Q will be equal to your R by S. So therefore R by your X will be equal to P is L divided by 100 minus L. Else I can write R by L is equals to X divided by 100 minus L. So the unknown resistance, ये जो X है ना, this is your unknown resistance.
This one is known resistance. So known resistance is connected in the left gap. Unknown resistance is connected in the right gap. ये very important है. ठीक है? तो unknown resistance कैसे निकालोगे? X is equals to your R into 100 minus L divided by L. ये हो गया फॉर्मूला डायरेक्टली. Clear? So meter bridge is based on what? Wheatstone bridge. इसमें 4 resistors रहते हैं. L 100 minus L. यानी L का रोल कौन प्ले कर रहा है? P रोल प्ले कर रहा है. और 100 minus L is represented by Q. So P by Q is equals to R by S. और X की जगह ये वाला कौन रोल कर रहा है right now? This will be equal to your S. S is equals to your, तो R के R, S की जगह X, P की जगह L और Q की जगह 100 minus L. So cross multiply कर लीजिए. So unknown resistance can be calculated by the formula. X is equals to your R into 100 minus L divided by your L. These are the two formulas to be remembered in the meter bridge and as well as of your Wheatstone bridge. Wheatstone bridge, Kirchhoff laws. So Kirchhoff first law is based on law of conservation of charges, and second law is based on law of conservation of your energy. Wheatstone bridge के अंदर अपने को याद क्या रखना है? अगर 5 resistance है, middle one will become ineffective if the current through the galvanometer is becoming for the 0. So resistance across A and B will be equal to this much. और कंडीशन क्या है बेटा अपने को? P by Q must be equal to R by S. This is the condition for the Wheatstone bridge. P by Q must be equal to R by S. Meter bridge is again based on your Wheatstone bridge. इसका फॉर्मूला क्या हो? Known resistance is equals to known resistance in the left gap into 100 minus L divided by L. And known resistance always connected in the left gap. Known resistance is always connected in the right. This one is left gap. This one is right. Clear बेटा? Yes, sir. Sure. The question is एक बार जल्दी से. Wheatstone bridge R1, R2, R3, R4. अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ R1, R3, what will be the condition for the balance of this beta? R1 by R2 must be equal to R4 by R3. Then R5 will become for me ineffective. So remove it and solve the problem. So R1, R2 will be in series, R4 and R3 will be in series, and effective will be equal to 1 by R1 plus 1 by R3 plus 1 by R4. ये basic method. ये problem try करो अभी. This one is 8, 4, 4, 2 and 5. क्या Wheatstone बन रहा है नहीं बन रहा पहले देख लो. This will be equal to how much right now for me first? This will be equal to P. This will be equal to Q. This will be equal to your R. This will be equal to your S. क्या P by Q is equal to R by S हो रहा? P by Q is equals to R by S. P की वैल्यू कितनी है? 8. Q की वैल्यू कितनी है? 4. R की वैल्यू कितनी है? 4. 2. 2 1s are 2 2s are 4 1s are 4 2s are. LHS is equals to RHS. तो क्या करोगे? बीच वाला निकाल दोगे. The बीच वाला will become ineffective. So remove it. 8 and 4 will be in series 12. 4 and 2 will be in series 6. 12 and 6 will be in parallel. So that will be equal to 12 into 6 divided by 12 plus 6. 72 divided by 18. That will be equal to 4 ohms. आ गया? Yes, sir. मीटर बीच बोला था मैंने. लेफ्ट गैप राइट गैप कंडीशन क्या हो जाएगा? अननोन रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू R into 100 minus L divided by L. इसके ऊपर भी एक प्रॉब्लम देख लेते हैं. मीटर वगैरह तो मैंने आपको करवा दिया था, वोल्ट मीटर वगैरह भी करवा दिया था. थोड़ी प्रॉब्लम्स कर लेते हैं. करंट इलेक्ट्रिसिटी PYQ देखो बेटा. 2013 नीट का क्वेश्चन.
The resistance of the four arms P, Q, R and S in a Wheatstone bridge are 10 ohm, 30 ohm, 30 ohm and 90 ohm. P के पास 10 है, Q के पास कितना है 30. ये क्या हो गया P, ये क्या हो गया Q, ये क्या हो गया R, और ये हो गया S. क्या P by Q is equals to R by S हो रहा है क्या देख लीजिए पहले. P by Q is equals to R by S. चेक कर लीजिए 10 divided by 30 is equals to 30 divided by 90, isn't it? This is 31s are 33s are is 0 gets balanced, isn't it? So the EMF and internal resistance of the cells are 7 volt and its internal resistance is 5. Yani these two are in which combination beta? Series. These two are also in series. If it should be बदला है नहीं ना, वो resistance of arm है, तो respective the galvanometer resistance is 50 meter. यानी दोनों के बीच में galvanometer था, जिसका resistance कितना था 50. It will become the ineffective. And 10 and 3 will be in which combination? 10 and 30 will be in series. 30 and 90 will be in series. And 10 plus 30, 40. And 90 plus 30, 120. So these two are in parallel. 40 into 120 divided by 40 plus 120. तो कितना आ रहा है effective? 30. पूछ रहा क्या current drawn from the cell. यानी इस cell से ये current कितना आ रहा है? Current निकालने का formula V is equals to I into R. So I is equals to V divided by R effective. V की वैल्यू कितना दे रखा है प्रॉब्लम में 7 डिवाइडेड बाय ऊपर का पूरा इफेक्टिव कितना है मेरे पास 30 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है मेरे पास 5. इंटरनल रेजिस्टेंस भी है ना, तो ऊपर पूरा सिंपलीफाई करे तो R कितना आ रहा था 30 ओम्स आ रहा था. उसके बाद नीचे एक बैटरी है, फिर यहाँ पर भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस, ये 5 ओम्स, इसमें से करंट जा रहा था, ये 7 वोल्ट था. ठीक है, 30 एंड 5 विल बी इन सीरीज. सो 30 प्लस 34 7 by 34 7 1 is 7 5 1 by 5 1 by 5 मतलब पॉइंट. आगे ऐसे देखो, चलो क्वेश्चन नंबर देख लीजिए. नेक्स्ट वन 49. A resistance wire is connected in the left gap of the meter bridge. लेफ्ट गैप में क्या है मेरे पास, ये वाला left gap bridge of 10 ohm resistance in the right gap. A resistance has been connected in the left gap of a meter bridge. Balance is ये 10 ohm resistance in the right gap. Right gap में resistance कितना है मेरे पास, यानी ये वाला क्या हो जाएगा S, ये क्या हो जाएगा X और R, ये क्या हो जाएगा L. This will be your 100 minus L. तो उसने क्या बोला, resistance wire is connected in the left gap. A resistance wire is been connected in the left gap of the meter bridge. Balances 10 ohm resistance in the right gap at a point which divides the wire in the ratio of 3:2. Total length कितना है मेरे पास L है, इसको कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है 3:2. The length of the resistance wire is 1.5. If the length of the resistance wire is 1.5 meter, the length of the 1 ohm resistance will be equal to how much? पहले इसको देख लो, Wheatstone bridge को x by your 3L will be equal to 10 by your 2L. तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50. ये हो गया 15, isn't it? Now these two are in which combination? Series. These two will be in the series. Effective will be in parallel. अगर 15 ohm के लिए 1.5 है, तो 1 ohm के लिए कितना हो? 15 ohm के लिए 1.5 है, तो 1 ohm के लिए कितना बन जाएगा? So 15 के लिए देखो, 15 ohms के लिए 1.5, isn't it? तो 1 के लिए कितना हो जाएगा, कितना करोगे 1.5 into 15 divided by this one. 15 में चले जाएगा 1.5 divided by 10. 15 बन जाए 15 बन जाए 1 by 10. 1 by 10 मतलब 10 power minus 1. So 0.1 meters. अगर और कल हम लोग literally will try to solve the numericals related to this one only बेटा. एक बार पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी आप लोग जरा रिवाइज करके आ जाइए. कल हुआ तो even I will try to revise with the cells. Cells एक बार सीरीज पैरेलल फिर एक बार कर लेंगे. Then we'll try to do the numericals related to this one. ठीक है.